Hi everyone, I'm Star and welcome to Universe Alchemy. This channel is created with pure intention to help you find answers, clarity, and inner peace through tarot and universe guidance. So, this particular reading is for January 2026. So, we have two piles here, pile 1 and pile 2. Pick your pile and let's get started. People who have chosen pile 1, this particular reading is for them. Let's get started. Okay, so we have Knight of Pentacles in reverse. We have Death in reverse. And then we have Devil. And bottom of the deck, we have Nine of Cups, which is quite pretty. Let my camera focus on it. Yes. So I'm going to keep it here. Okay. The Knight of Pentacles in reverse with Death in reverse. I feel आप लोग बहुत ज़्यादा 2025 से बहुत बैगेज कैरी कर रहे हैं खुद के साथ. बहुत सारी चीज़ें हैं that needs to leave behind in 2025. And this card says that in terms of finances, in terms of career, you may feel stuck, you may feel trapped, and you may feel कि चीज़ें आपके तरीके से नहीं हो रही हैं. You may feel finances बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं, and financially मे भी आप खुद को इतना ज़्यादा फ्री और इंडिपेंडेंट ना पाएँ. This is all in your head since we have devil here, right? You may be wanting to change, you may want changes. Obviously 2026 है तो हम सबको नया नया we have dreams, we have plans, है ना. तो changes आपने प्लान किए होंगे, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पीछे फील कर रहे हैं. जनवरी 2026 में, राइट? But this is all in your mind. We have Devil card. Devil says it's all in your mind, right? You need to come out of that victim mentality, I would say. क्योंकि जो devil की एनर्जी होती है वो आपको victim mentality में डाल देती है, and वो आपको change नहीं होने देती. So कहीं ना कहीं ये overall theme आपकी जनवरी में होगी कि आप अपनी मेंटालिटी, अपने पैटर्न्स, बिलीफ पैटर्न्स, अनसर्टनिटी के ऊपर काम करें, राइट? द नाइट ऑफ पेंटिकल्स सेज दैट इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव फाइनेंसेस एट ऑल. वी हैव इनकम ग्रोथ बट स्टडी. वो जो नाइट ऑफ पेंटिकल होता है वो स्टडी ग्रोथ लेकर आता है. स्लो होती है बट स्टडी होती है, राइट? बट अब ये रिवर्स में है तो यू मे फील कि जितना पहले था उससे भी शायद कहीं ना कहीं कम है ग्रोथ, उससे भी और ज़्यादा है. पिछले साल से था, अभी और ज़्यादा कम हो सकता है. मे बी आपके एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाए जनवरी 2026 में, राइट? द डेथ कार्ड, हाउएवर, अगेन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अनलेस आप रिसेप्टिव हैं चीज़ों को लेकर. So the death card says कि transformation is needed, but we need to think about it, right? And somewhere I feel आप बहुत चीज़ों को लेकर रिजिड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर जैसे फॉर एग्जांपल नई एक जॉब पर है तो एक ही जॉब पर रहना है, दूसरी पे नहीं जाना है, राइट? एंड एक पोजीशन पर है तो कुछ नया नहीं सीखना है, समथिंग लाइक दैट. तो अगर वो मेंटालिटी है तो वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट मेंटालिटी. वी नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न, राइट? एंड समवेयर आई फील दैट विद द डेविल कार्ड, वो जो टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं, वो जो कंफर्ट होता है कहीं ना कहीं, वो हमको थोड़ा सा सी कंफर्ट इज गुड, इट्स नॉट बैड, बट एट व्हाट कॉस्ट? सो यू नीड टू वर्क ऑन योर
thoughts, you need to work on your patterns, right? Come out of your comfort zone. Like आपको जो for example, if I talk about Knight of Pentacles and you are saying that you don't have money and you are not even putting efforts for your job, for the change in your job, so I would say कि तो पहले come out of your house, move, right? Knight of Pentacle, you cannot expect financial freedom जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, राइट? डेथ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स मूवमेंट, बट जो डेविल होता है वो उसको पकड़ के रखता है. अगर हम क्लासिक राइडो वाइट में देखें तो जो टैरो कार्ड में होता है, जो रियल टैरो कार्ड में जो डेविल होता है, वो जो है वो पकड़ के रखता है. वो एक ही चीज़ पर चीज़ों को मे बी कम्फर्ट जोन में, मे बी लग्जरी, मे बी व्हाट्सोएवर कम्फर्ट में आपको बांध के रखता है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती, राइट? तो then we have 9 of cups. It's like ki you'll get what you want, but you'll have to work for it, you'll have to move, right? So this is the overall energy of 2026 January. Let's get some guidance for your career first. If you move, if you take actions, not too many cards. 5, 1. I'll keep it here. 5/1 January 2026. Career and finances. Exactly. See, show the world the real you. Full moon in Aquarius. Again, सेम थिंग जो पहले आई थी. जब तक आप काम करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी. सो यूल हैव टू गो आउट, यूल हैव टू सर्च फॉर चेंज, यूल हैव टू पुट एक्शंस, यू हैव टू वर्क, एज सिंपल एज दैट, राइट? एंड इट्स फुल मून इन एक्वेरियस. अभी आज कल ही फुल मून था, तो दैट मे बी साइन फॉर यू. मे बी इस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक आपका लकी पीरियड हो सकता है. आप इसमें एनर्जीज पुट कर सकते हैं. आप यू कैन गो फॉर इंटरव्यूज, यू कैन आस्क फॉर प्रमोशंस, यू कैन लुक फॉर जॉब चेंज, व्हाट्सएवर, राइट? बट वर्क, टेक एक्शंस, राइट? एंड you are worthy of that comfort that you are looking for, that luxury that you're looking for. But for that, you have to show the world the real you, right? And see how beautiful it is. It's like, I feel कहीं ना कहीं आपके, if you have health issues as well, like if you are कई बार ऐसा होता है कि हम इतने रिजिड हो जाते हैं, तो वो रिजिडिटी की वजह से हमें फिजिकली हम बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने लगते हैं खुद में. अब ऑब्वियसली इफ़ वी विल नॉट मूव आउट फ्रॉम आवर हाउस, तो वो हमें दिक्कत देता है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो इट्स अ हाई साइन. मूव योर बॉडी, टेक एक्शंस, गो आउट, राइट? I also feel कि this mental burden, जो overthinking है, may be related to career, this may be causing you back pain as well, shoulder pain as well, right? And there's something that you're hiding from, there's something that you need to come out of, the fear or the toxic patterns. So you need to work on that. This was particularly for your finances. Now let's get one card for your love and personal relationship. Pile 1, love and personal relationship. Okay, 2 more cards.
So we have passion. Keep the flame of passion alive. It's the heartbeat of love. Beautiful. I'll take one more card for your heartbreak. I knew it. Okay. And bottom of the deck, we have this beautiful card, Doorway, that says an opportunity is about to present itself that leads you to a new person. But I feel this is for very few of you, not all of you, because why I said that, first of all, because of the passion card. Passion says keep the flame of passion alive. It's heartbeat of love, right? So most of you, I feel you people are already in already with the person, right? And you need to work on it. Maybe हो सकता है कि that if you are someone who's feeling that light of your relationship is fading, I feel you need to put more passionate. Maybe go out with your person, go have fun with them, small activities, maybe movies, or just small lunch or dinner together, right? So I think you need to bring more passion in your personal relationships. And if you are someone who don't have anyone in life, since we have heartbreak, I knew it was about to come, because passion is something that either you are into relationship, or if you are single for say, I would say whatsoever you are looking for in your partner, I would say be that thing yourself. Like if you wish कि आपका पार्टनर आपको बहुत केयर करे या टॉक्सिक ना हो, तो फॉर दैट बी दैट पर्सन योरसेल्फ, राइट? इफ़ यू फील दैट पास की इनसिक्योरिटीज़ चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको आगे नहीं बढ़ने देती, तो आई वुड सजेस्ट कि लीव दैट थिंग बिहाइंड, राइट? एंड इफ़ यू आर समवन जिनकी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, इफ़ यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हैं, तो आई वुड से कि कीप थिंग्स लाइट, keep things light, and again have passion, right? And for those who are looking for love, so I think this particular card is for you, Doorway. An opportunity is about to present itself that leads you to a new person. But after this, first you have to be that person for yourself. You need to heal yourself from past, right? If you want that other person is healed already, कि वो पास्ट का बैगेज आपके सामने ना लेकर आए, तो फॉर दैट यू हैव टू कीप योर सेल्फ हेल्दी इन ऑल वे पॉसिबल, राइट? मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, राइट? सो keep yourself healthy, keep yourself open, be receptive for changes for that matter, right? And it's beautiful card, right? And if you keep on like fearing, if you keep on thinking कि पता नहीं should I believe that person, or should I believe or not, I would say कि give it a chance, because passion is all about that, right? Go with your instinct, go with that thing, right? So let's move ahead with the personal guidance for 2026 January. Pile 1. With this card, I also feel that if you are someone who has someone
in your mind, and you're thinking if I should say, if I should express my feeling, I would say give it a shot, because if it's yes, it's yes. If it's no, you can move on. You can still concentrate, right? If there's something that you need clarity on, I feel talk, right? एटलीस्ट एक सामने से एक जवाब तो आया है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम हट करेंगे, सो दैट यू कैन करियर फोकस ऑन योर करियर. ओके, 2026 January guidance. Card for buying one. So we have, okay, we have perspective. None of this matters. Zoom out, common ground. I don't know, इसमें एक और कार्ड है, that is void. ये मुझे उस कार्ड की याद दिला रहा है. And this card says perspective. अगर हम perspective की बात करें, जैसे ये कार्ड है, I immediately thought of the Hanged Man, that says look for the bigger picture, look for the changed viewpoint, think out of box basically, right? So this is particularly for people who need change. Like I said before, that it's all in your head. The sooner you work on your thoughts, the sooner you'll get out of the situation. One more card I'll take out for you. I also see this card as like a perspective that, for example, if how you perceive your current situation, like literally. For example, let's say you are in college and you are perceiving the college as students' point of view, but then you passed out and clear exams, and फिर आप उसी कॉलेज में या किसी और कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं. तो वो जो देखने का नज़रिया है, मे बी सेम प्लेस, मे बी यू हैव स्टडीड फ्रॉम द सेम कॉलेज एंड नाउ यू आर वर्किंग देयर, राइट? तो आई फील दैट चेंज इन perspective is also there. Like for example, maybe earlier you were an intern in a company, राइट? तो आपका उसको देखने का नज़रिया डिफरेंट था, उस कंपनी को, उस पोजीशन को देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट था. बट देन मे बी आप लेट्स से मैनेजर बन गए उसी पर्टिकुलर कंपनी के, तो उस पर्टिकुलर जगह को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सपेक्टिव कार्ड ये भी बोल रहा है कि चेंज इन द पोजीशन टू चेंज द पर्सपेक्टिव बेसिकली. Obviously it's not for everyone, but this is something interesting. One more card for lifting the veil. Beautiful card. Let me zoom it for you. Okay, questioning everything, anything unaligned must go, like we talked about earlier. जो चीज़ सॉल्व नहीं कर रही, जो चीज़ हमारी एनर्जीज के साथ मैच नहीं कर रही, जो चीज़ हमारी करंट सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रही, करंट फेज ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ, राइट, उसके साथ मैच नहीं कर रही, we need to let it go. We need to move out from that situation. We need to cross the threshold, right? ताकि हम दूसरी तरफ देख सकें. And look how beautiful this particular, it's so beautiful,
right? So I think it's about the perspective. See kitna dark hai, and when you lift the veil, how colorful it is. See the change, right? So it's about small actions. I also feel that you need to bring balance as well, because since we have, I don't know if it is visible, we have like tall towers and some modern buildings, some towers and buildings here, and right, and then we have this beautiful green space, right? It's a balance, like it's something balance of internal world and outer world. This is something that is happening around us, I feel, because the war, the pollution, and the changes, the modernization. Maybe we are someone who, you know, crave for more greenery, for more nature. So we need to create balance, right? That this is the reality. Definitely, we have this surrounding, but we need to create balance. That if we want few moment of serenity in this particular area, तो हमें इस एरिया में सर्वाइव करना पड़ेगा पहले. यहाँ से अर्न करना है तभी हम इस एरिया को. I'm not saying it obviously. ऐसा नहीं है कि मैं कि जाओ और पोल्यूशन वाली उसमें नहीं. It's just कि this is the real world and we need to create balance. It's as similar as कि आप अपने घर के कंफर्ट में बैठे हैं एंड यू हैव एवरीथिंग there, the food, the security, the safety. That doesn't mean that you're going to have the long term income from your house only, until if you're working from home only, right? But otherwise you have to go out of that particular. And I feel obviously you'll see this phase as well, this phase as well, again this phase as well, but balance is still there. Beautiful. इस पर्टिकुलर कार्ड जूम आउट से ये भी लग रहा है समवेयर आई ऑल्सो फील सिंस इट्स ऑल डार्क एंड though it is not, but it is giving me this very interesting message of period of hibernation. If you're someone जो कि लोगों से कट ऑफ करके एंड अपने फेज में चले जाते हैं कि मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ, आई नीड नो वन इन माई लाइफ, आई फील यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम दैट एनर्जी टू, right? So I think socialize more, go out, have fun with friends, and work more, look for new job opportunities. The devil card also, the one last message जो कि मैं ending में बोलना चाहूँगी, that the devil card is all about luring you to a place of toxicity, कुछ ऐसा attractive दिखा के, maybe बहुत ज़्यादा आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल यही है, इफ़ लेट्स से इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ यू आर समवन हु लाइक नेचर बट यू नीड मनी एज वेल, राइट? तो द डेविल, व्हाट द डेविल डज, वो इट विल गिव यू मनी बट यू हैव टू वर्क हेयर, राइट? इन दिस polluted area, in this industrialized modern world, but the guidance says balance again. You deserve luxury, you deserve comfort, but create balance. It's just all in your head. And I just saw a video that says if you are overthink good, right? So you can keep that in mind. Overthink good. So that is all for you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonate हुए हो, and
let's end it here. If you liked it, please like, share, subscribe the channel. It means a lot for me. Thank you so much.